हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड एंड ट्रैवल हैक्स चैनल। तो आज का ये जो वीडियो है, दिस इज अबाउट अ ट्रैवल हैक एंड अ रियल लाइफ स्टोरी ऑफ माइन वेयर इन द मंथ ऑफ January 2021 I actually stayed for 3 free nights at JW Marriott in Jaisalmer, Rajasthan in India. So stick with me in this video where I will reveal the secret how I was able to redeem this 3 free nights at JW Marriott in Jaisalmer. And this is not a clickbait, guys. And without going further, please remember, if you like this video, give it a like, subscribe and a comment. So stay tuned in the video and let's begin. So guys, before I begin this video, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में, क्रेडिट कार्ड के बारे में बेसिक्स पता होगा। अगर नहीं पता है तो डोंट वरी, यू कैन चेक आउट माई प्रीवियस वीडियोस जिसमें मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है व्हाट आर डिफरेंट रिवॉर्ड पॉइंट्स, रिवॉर्ड रेशियोज एटसेट्रा एटसेट्रा। बट दिस वीडियो इज नॉट अबाउट क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स, दिस इज अबाउट द ट्रैवल हैक। सो हुआ ऐसे था गाइस कि मेरे पास है अमेरिकन एक्सप्रेस के 3 क्रेडिट कार्ड्स, जिसमें से एक है प्लैटिनम चार्ज कार्ड, एक है MRCC विच इज अ मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड, और एक है गोल्ड चार्ज कार्ड। इस पे मैंने काफी सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स अक्यूमुलेट किए ओवर से 2 years, एंड इन द मंथ ऑफ January यूजिंग दीज रिवॉर्ड पॉइंट्स मैंने रिडीम किया 3 free nights in JW Marriott Jaisalmer. Now, how many reward points did I redeem? So this is where the tricky and the lucky part comes into picture, guys. मैंने जब इसको रिडीम किया था that time for 3 free nights, I just required 45,000 Marriott bonvoy points. Now you'll be confused कि Marriott bonvoy points क्या होता है और Amex के membership reward points क्या होते हैं। सो गाइज, होता ऐसा है कि अमेरिकन एक्सप्रेस के जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं, आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो आपके मैरियट बोनवॉय अकाउंट में। व्हाट इज अ मैरियट बोनवॉय अकाउंट? मैरियट बोनवॉय इज बेसिकली द प्रोग्राम रन बाय द मैरियट ग्रुप ऑफ होटल्स वर्ल्ड वाइड, जिसके अंदर आप रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट करके यू कैन यूज देम टू रिडीम फॉर फ्री नाइट्स और हैविंग फूड एट मैरियट होटल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। सो मैरियट बोनवॉय का जो प्रोग्राम है, उसके जो होटल का प्रोग्राम है, उसके अंदर पॉइंट्स ट्रांसफर करने के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस इज द ओनली क्रेडिट कार्ड which allows you to transfer these points from the credit card account to the Marriott bonvoy account. So basically guys, after doing the research, मुझे चाहिए थे 45,000 American Express reward points, right? अभी मेरे पास इतने points वो टाइम पे थे नहीं, तो मैंने क्या किया, I took the easiest way out. मैंने रेफर किया मेरे 3 फ्रेंड्स को। That time American Express gave me 12,000 reward points for referring every friend to the American Express membership reward credit card. ठीक है, तो इससे हुआ क्या, I accumulated 36,000 reward points within a month, क्योंकि वो टाइम पे American Express का ऑफर चल रहा था 50% more reward points on the referral. Right now, the easiest method that you can accumulate these reward points and redeem them for the Marriott bonvoy is, what you have to do is फर्स्ट अप्लाई फॉर एन अमेरिकन एक्सप्रेस मेंबरशिप रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, वो अगर आपको मिल गया तो आपको मिलेंगे स्टार्टिंग के ज्वाइनिंग बोनस फॉर 4,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक होल्ड ऑफ 6 फ्रेंड्स। उनको फर्स्ट ईयर की कोई भी ज्वाइनिंग फी नहीं लगेगी। आपको उनको रिक्वेस्ट करना होगा कि प्लीज अप्लाई फॉर दिस क्रेडिट कार्ड। ऑन एवरी सक्सेसफुल अप्रूवल यू आर एंटाइटल्ड टू गेट 8,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। सो 8,000 into 6 friends is 48,000 membership reward points, guys. इसके साथ आप accumulate करेंगे आपके 4,000, तो हो जाएंगे almost 52,000 membership reward points. Then what you easily have to do is transfer these reward points to your Marriott bonvoy account. You have to link that through the American Express website. अगर आपको confusion होगा तो you can always comment below and I will be happy to resolve it for you. And after transferring these reward points, you have to go to the Marriott website. You have to check the different properties. एक categories होती है Marriott bonvoy में, category 2, 3, 4, 5, 6 different properties के लिए different reward points चाहिए होते हैं guys. So after accumulating say 50-55,000 reward points, you can check out their website. आप उसमें check out कर सकते हो कि कौन से property में आपको stay करना है, कौन से city में। Mind you, it's worldwide, it's not only for India, guys. सो आप चेकआउट कीजिए। उसके बाद इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूज करके यू कैन बुक अ स्टे। सो नॉर्मली कैटेगरी 3 होटल्स विच इज व्हाट द जैसलमेर वन वाज requires around 15,000 reward points per night.
That's how I could redeem 3 nights for 45,000 reward points. अगर आपको कैटेगरी 1 होटल में रहना है तो that is only 5,000 reward points. So for 50,000 American Express points, you can stay for 10 nights in a Marriott Bonvoy hotel, guys. So this is how the entire process works. अभी आप सोचेंगे कि ये इतना easy sound कर रहा है, but ये actually में possible होता है कि नहीं? So guys, this is actually possible. काफी लोग ये चीजें करते हैं. इसमें सिर्फ 2-3 कैच ऐसे होते हैं कि जैसे मेरे स्टे के साथ मुझे ब्रेकफास्ट फ्री नहीं मिला, but that's fine. I had to literally pay nothing to get these 3 free nights. All I needed was 3 friends who could help me get 36,000 reward points. 9,000 reward points मेरे पास पहले से थे, and using the entirety of these reward points, I could transfer them to Marriott Bonvoy and redeem them for 3 nights. So guys, I hope you liked the video. I hope you don't have any confusion. अगर आपको कुछ confusion है, please comment below. Give this video a like, give a subscribe, and I'll see you in the next one, guys.